Bright sunshine bringing warmth on a bone-chilling December morning in Meghalaya. The serpentine roads take us through a forest to a remote village, Sonsak, in East Garo Hills. The morning is also bringing new hope in the lives of these women who have come to an assessment program in order to be enrolled at the Usha and Meghalaya State Rural Livelihood Society or MSRLS Training Cum Production Center. With the Meghalaya State Pollution Control Board and Forest and Environment Department enforcing plastic waste management rules and the government resultantly encouraging the use of cloth bags, the MSRLS saw this as an opportunity to curb pollution and also create employment. And that is what led to the collaboration with the Usha Silai School for Training Centers across the state. The association was initially started with 2 demonstration centers, but their success led to the opening of 14 new training cum production centers covering 9 districts of Meghalaya. We found that the women are very into to learn the skills and the knowledge that they have gained through these centers with the master trainers deputed by Usha Silai, and it seemed that there is a very good outcome as the women who have passed out from these centers, now they have started their own units. So we hope that with this initiative we will be able to arrest the poverty in rural area, especially those area which is semi-urban. So this would be the opportunity for them so that they learn the skills and start livelihood activities through tailoring. The assessment program is being organized in the East Garo Hills, a tribal area with no prior sewing centers. These women are here to learn a skill they have very limited knowledge about. But that doesn't discourage them. For the assessment program, we contact the government people. They call the ladies of their own block. So all those ladies, they come and we give them a question paper where there are some basic questions about these measurements, about what are the things that will be required for a drafting. So we take a knowledge, what type of famous idea they have, and secondly, we ask them to state. The women are busy writing their answers. Some are facing difficulties as they can't read or write. Some don't know the basics of sewing but are eager to learn. While some know the basics but can't sew in a straight line. The one thing all these women have in common is a fierce desire for financial independence. In Mairang, a new training cum production center has been inaugurated where women are learning the basics of sewing. Being a tribal area, language could be a barrier. But these women won't let that come between them and their dreams. The master trainer, Rumpi, is teaching the women how to measure and cut the cloth. Straight line भी दे सकते हो तुम लोग. Finishing होना The first goal of this training is to teach women how to sew in a straight line. किसी का तो थोड़ा आता है ना, और किसी को तो कुछ भी नहीं आता है, और जब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होने तक उन लोगों को बहुत सारा जो करें वो आ जाता है और खुद पर मैं कर सकती हूँ, ये होता है.
The women are given a piece of cloth with chalk markings. It is only with practice that they will perfect the skill of sewing in a straight line. And so the practical training begins with the women taking to their machines. Rumpi goes around the room giving everyone feedback, helping them sew straight. Some of these women and girls are from the Khasi tribe. They've had very limited exposure to the outside world. They believe sewing will give them that exposure and an identity. I hope myself that I want to become a more popular woman to stitching clothes. I hope that this training will help me a lot to do my good job also. Once the women complete their training, they will be making cloth bags and contributing to the environment in their own small way. The partnership between Usha and MSRLS is working towards a mutual goal of community building by helping uplift a key section of it. Personally, on the lives of the women, as I said, the direct impact which we can see is the increase in their incomes, the increase in their disposable incomes, which increases the overall well-being of not only the women but the entire family. When it comes to environment, more importantly, the impact is because of the encouragement which we give to not only stitching of clothes and all, but cotton bags and cotton carry items and all, which is very helpful in replacing the plastic bags. Government partnerships for the Usha Silai School program are proving to be very significant in terms of their impact and reach in the lives of rural women. So government agencies which have been wanting to work with rural women on skill development and entrepreneurship development find a ready platform in the Usha Silai School program. This program has a presence in all states and union territories of India, has a robust MIS system which reports data for regular review and monitoring. We have 75 NGO partners who are very credible and dedicated to this work. Also, we provide customized content which is also available in 12 regional languages, and also master trainers who can do trainings in various regional languages as well. Learn to earn is the message Usha is sending through these Silai centers, and these women are not only being trained in a skill but are on the path of becoming providers in society. Moving from the Himalayas in Meghalaya to the Aravalis in Rajasthan and Jaipur, the Pink City. The Hawa Mahal is one of Jaipur's iconic landmarks, but what lies behind the beautiful architecture are the strict rules of the Parda system. A culture where women were forbidden from appearing in public without a face covering, where women were restricted to their homes, forget about going out to work. But times have changed. Today, women have chosen to let go of old restrictive practices. They want to break the shackles, find their voice, and create an identity of their own. It is in this training cum production center that they see themselves actively working towards their dreams. It is a new beginning, and turning their dreams into a reality is a partnership between Usha and the Northwestern Railway Women Welfare Organization, or NWRWWO. With an aim to build something sustainable and make women financially independent, the Railway Board started this training cum production center in a railway colony in Jaipur. हमारा विमेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मार्जिनलाइज्ड वुमेन के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वुमेन के लिए जो है वो काफ़ी कार्य करता है। तो मुझे बहुत दिनों से मन था और कि एक सिलाई सेंटर होना चाहिए। तो मैंने काफ़ी खोजबीन की, रिसर्च किया और मुझे ये कुशलता के कदम मैंने NDTV में देखा। वहाँ से मैंने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लेकर के मैंने इंटरैक्ट करने की कोशिश की और उसके बाद फिर मुझे रास्ता मिलता गया और ये आपके सामने है। The husbands of most of these women work in the railways.
but that isn't a prerequisite. इन्होंने चुन करके उषा के साथ मिल करके यहाँ पे एक सिलाई मशीन ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसमें अभी 10 मशीनें हैं। यहाँ रेलवे की ही नहीं, जो नॉन रेलवे हैं उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्टिचिंग की ट्रेनिंग देंगे। The training center has been recently inaugurated and the first batch is ready. With the help of Unayan Samiti, a local NGO, Usha has identified 10 women who will be trained in the basics of sewing for the next 3 weeks. Once the basic training is over, the women will then be qualified to take the advanced training, which will open new avenues for them. जयपुर जैसे शहर में जहाँ की लोकल टेक्सटाइल्स और यहाँ की जो यूनिक डिज़ाइन है काफ़ी फेमस है, तो अगर हम यहाँ के लोगों को, स्पेशली महिलाओं को ये केपेबल बना दें कि वो ये स्टिचिंग कर पाएँ, तो उनको एक अपने जीवन यापन का रास्ता मिल जाता है। Poonam Singh comes from an army background and her husband works in the railways department. Poonam's father was the inspiration behind her early interest in stitching as a hobby. शौक मेरे को बहुत था। मैं जब छोटी थी, मेरे पापा है ना, मतलब जैसे बोलते रहते कि इसको उधेड़ो, इसको सिलो, ऐसे करो वैसे करो। उनको मतलब बाहर जाना पसंद नहीं था। आर्मी में मेरे पापा, तो उन्हें ये था कि मतलब अपने घर पे रहो, कुछ भी करते रहो, सिलाई करते रहो, उधेड़ो, ये करो वो करो, तो मेरे को अच्छा लगता था। बढ़िया। It was Poonam's dedication and will to be a self-reliant, independent woman that she decided to turn her hobby into a career. While sewing was Poonam's childhood hobby, Manisha is completely new to this skill and has never worked on a machine before. हमने कभी मशीन यूज़ करना नहीं सीखा, तो हमने पहले हाथ की देखी, फिर हमने पैर से सीखा, फिर हमने जैसे लाइट वाली से सीखा, तो अब हम खूब अच्छा काम कर रहे हैं। Manisha may have started with very little knowledge about sewing, but her hard work and commitment has enhanced her skill set. अब जैसे एक शर्ट हमने यहाँ तो मैम के हिसाब से हमने बाजू कॉलर सीखा, तो जैसे मान ले एक दिन में मैं एक शर्ट तो निकाल ही देती हूँ। Like Manisha, Meena was also new to stitching and sewing. It was after meeting members of a local NGO, Unayan Samiti, that Meena found out about the training cum production center and decided to turn her life around. कम से कम 20 एक लेडी एक दिन मीटिंग एक हुई और उसमें हम लोग पहुँचे। फिर वहाँ एक फॉर्म भराया गया, तो उसमें सारा कुछ सारा मतलब मेजरमेंट कैसे होता है, क्या होता है, जिसको जो जो पता था उस हिसाब से 10 लेडीज उसमें से सिलेक्ट हो गई। उन्नयन समिति विमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है। हमको लगता है कि दुनिया की जो आधी आबादी है उसके लिए सोचना, उसके लिए काम करना बहुत आवश्यक है। हमेशा आधी आबादी को किसी निर्णयों में भागीदार नहीं माना जाता। वो किसी भी सामाजिक निर्णयों में या पारिवारिक निर्णयों में कोई उनकी भागीदारी नहीं होती है। भागीदारी नहीं होने का जो कारण जो हमको लगता है वो है कि आर्थिक रूप से वो उतने सक्षम नहीं होते। तो आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए हमको लगता है कि स्किल की बहुत आवश्यकता है। Meena used to struggle with the machine, but today she has honed her skills to such extent that once this training gets over, she herself will start training the next few batches. ये मशीन तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि ये तो हाई पावर मशीन है 4000 वोल्ट की, और मैंने कभी हैंडल वाली मशीन भी अच्छे से नहीं चलाई थी, मतलब सीधा भी टाका नहीं आता था। तो मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत एक कहना चाहिए कि रोमांचक चीज़ है ये मेरे लिए। तो सब बैठना ही मेरे लिए बहुत है, जैसे एक हॉट सीट पर बैठे हुए हैं उस तरीके से। मैंने जब फर्स्ट टाइम इनको देखा था तो ये फर्स्ट टाइम सिर्फ मैं से सहमी सी बैठी थी और मेरे से बात करने में भी इनको बड़ा झिझक लग रहा था कि मैडम आई हैं, कोई पता नहीं क्या बोलेगी, क्या कहेंगी ये हमसे। और इनको मतलब अच्छे से हिंदी भी नहीं बोलना आता है कुछ महिलाओं को। आज इतने फेमिलियर हो गई है महिलाएं, सबसे पहले आके मेरे से बात करेगी और इतना बात करती है, इतना हंस के काम करती है और बहुत अच्छा इनको मतलब ये घर जाके भी अपना काम बताती है, तो बड़ा अच्छा लगता है इनको। The North-Western Railway Women's Welfare Organization has been committed to working for the welfare of railway employees and their families. Apart from this Silai school, they have donated RO water plants and have also encouraged sports in various regions. And now, with this training cum production center, Usha and NWRWWO have given women a new skill and a new hope. वैसे तो सरकारी नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी है ना, जैसे खुद से नहीं कर पाते थे, वो तो हस्बैंड जो देते हैं वो ले आओ, ठीक है, बाकी अब खुद से करने का सोचेंगे। जैसे अब मेरे को यहाँ आके थोड़ी बहुत रुचि हुई,
भाई आगे और सिलाई सेंटर चले तो उससे मेरे को आगे नॉलेज हो, आगे ज्ञान बढ़े मेरे को। जब सास ससुर परिवार के लोग ये देखते हैं अर्निंग होने लगी है बहू को, तो वो खुद कहेंगे छोड़ दे, रोटी वोटी बाद में कर लेना, हम लोग थोड़ा लेट खा लेंगे, तू तो बना। कुछ जो बहनें हैं वो गांव की हैं, तो उनके गांव में कल्चर है कि आप घर पे काम करोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, घूंघट में रहोगे, और यहाँ तक आना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जो अभी ये आने लगी है, अब घर वालों को समझा सकती है कि आप रुको, बच्चों को भी मैनेज करके आती है और कहती है कि आप रुको और हम लोग कुछ सीखने जा रहे हैं। The Usha Silai schools have shown what collaborative power can do for the lives of women in the remotest parts of the country. Their collaborations with NGO ground partners, corporates, entities, and the government have helped train thousands of women and make them self-sufficient. One such collaboration comes from Odisha and is with the Rourkela steel plant to teach sewing to economically backward tribal women through the NGO Gram Uttan. The Rourkela steel plant has so far helped more than 100 women from 40 different villages to become self-sufficient. Currently, the organization is focusing on the women who live in the 4 block villages that are located within a 45 to 50 kilometer radius of the plant. हमारे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जोन है, जहाँ डायरेक्टली हमारे लोग अफेक्टेड हैं, वहाँ पे ही हम लोग ज़्यादातर हमारे जितने इनिशिएटिव्स और इंटरवेंशन CSR के तौर में करते हैं। वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में हमारे ट्राइबल वुमेन जो आते हैं, विलेज वुमेन, तो उनका स्किलिंग और उनको सस्टेनेबल मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देने का रहता है। तो उषा का रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, लास्ट 3 साल से हम लोग एसोसिएटेड हैं एक तरीके से, एंड इट्स कंटिन्यूइंग, द आउटपुट हैज़ बिन वेरी गुड। एंड लास्ट ईयर जो हम लोग ग्राम उत्थान के साथ मिल के उषा का जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें वी हैड हाउ मेनी 40 women, 40 में 20-20 का 2 बैच का हुआ था। A moment of peace with no worries. There is new hope that the financial instability of years and years could finally be coming to an end. Earlier, tuitions were the only source of income for Meena, but now Usha and Rourkela steel plant have helped her with a new dream, a dream that is about to come true. Usha has improved the lives of rural women who are confined to their homes. Truly, an evolving landscape in a growing India. उषा ग्रामोत्थान और स्टील प्लांट का तरफ से सेक्टर 20 में सिलाई ट्रेनिंग हो रहा है, वहाँ पर मैं गई थी, 15 दिन का ट्रेनिंग की, और वहाँ से हम लोग को सबको एक जो सिलाई मशीन मिला था। फिर सिलाई मशीन लेके आई और यहाँ पर घर में भी मैं खुद से सिलाई की, अपना सिलाई की, फिर सब कोई जाने कि मैं सिलाई करती हूँ। कुछ बच्चा भी आते हैं और ट्रेनिंग भी लेते हैं, मैं उनको सिलाई सिखाती भी हूँ, फिर ऐसे ही थोड़ा इनकम मेरा हो जाता है। Gram Uttan has played a significant role in connecting these tribal women with Usha's training program. For the last 31 years, Usha has been working continuously on the grassroots level for the upliftment of these women. 2013 में रूरल प्रोग्राम में उषा के साथ जुड़ा हुआ, यदि वन NGO, एक ही NGO उड़ीसा में है, 6 महीना में हम स्टडी करके देखा कि बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुआ। इसी बीच में हम राउरकेला स्टील अथॉरिटी के साथ, RSP के साथ भी काम किया, बहुत सारी जिला में काम किया, अराउंड 24 जिला में 1200 लोग को हम कवर किया उषा का साथ। Lalita Nayak, who comes from an Adivasi community, lost her husband in 2017 when she was just 30. Since then, she's taken care of all the household responsibilities and expenses. She faced many problems in earning a living, but she was determined and did not lose hope.
But now, the partnership between Usha and Rourkela Steel Plant has made Lalita's journey easier. Lalita is not only changing her life for the better, but she is also providing hand-holding and support to 6 other poor families as she teaches sewing to the women of those houses. मेरा इनकम नहीं था कुछ भी, बहुत थोड़ा बहुत इनकम करते थे और 1000-1200 रुपये कम करते थे। अभी उसका सुविधा से स्टील प्लांट और ग्राम उत्थान और उषा का तरफ से मेरे को सुविधा मिला, तो हम और कुछ इनकम कर सके और उससे ज़्यादा जितना कमाए थे उससे 2 गुना इनकम हो गया। उसी से अब हम थोड़ा मेरा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। Usha is continuously working to improve the social and economic status of women. And it is evident how training has proved to be beneficial for them as their conditions are changing and their lives are taking a new turn. और उसी ट्रेनिंग के बाद जो 40 महिलाएं हैं वो भी बहुत सारे महिलाओं को अभी सिखा रहे हैं अपने अपने घर में, और उनका जो इनकम है जितना भी पहले था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और बहुत सारे महिलाएं हैं जिनका इनकम नहीं था, अभी वो लोग जो है रोज़गारक्षम कर रहे हैं और उनका जो है सोशो इकोनॉमिक लाइफ में परिवर्तन बहुत आया है। Usha has been joining hands with like-minded partners, institutions as well as individuals to take the benefits to as many women beneficiaries as possible. More government entities can join hands with Usha for skill development and entrepreneurship development, where Usha can bring excellence in the skills of women. Such partnerships can also help generate mass-scale building institutions.